सो गाइस हाउ आर यू। आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ था क्योंकि यू यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड टुडे। मुझको मौका मिला दिगंबर जैन साधु को आहार दान करने के लिए। तो आज सुबह मैंने दिगंबर जैन मुनि महाराज को एक जैन आचार्य मुनि महाराज को दिगंबर मुनि महाराज को मैंने आहार दान किया और उसके बाद अच्छे से मंदिर में अभिषेक को देखा और पूजा भी किया और जाप भी किया। तो अब मेरा वक्त हो गया है मेरा मीटिंग के लिए। तो अब बस मैं यहाँ मेट्रो स्टेशन में हूँ और मैं बस मेट्रो ट्रेन के लिए वेट कर रहा हूँ और जैसे ही ट्रेन आएगा मैं तुरंत जाऊँगा और फिर मैं आज एक स्पेशल मीटिंग है, एक स्पेशल मीट एंड ग्रीट का एक इवेंट चल रहा है। तो मैं उस इवेंट को अटेंड कर रहा हूँ। मुझे भी पर्टिकुलरली इनविटेशन दिया है। आई हैव बीन गिवन स्पेशल इनविटेशन, सो आई विल बी अटेंडिंग दिस इवेंट ऑफ मीट एंड ग्रीट। एंड रिगार्डिंग व्हाट इज़ इट, let it be a surprise. I will let all of you know sometime in the future. But as of now, yeah. So just like how yesterday, when I was sitting in that park, I told you today evening I'll be having a meeting. So yes, now it's the time for my meeting. So I'm just waiting for the train, and once the train comes, I'll be going to my station, and there I'll be having my meeting in that area. So now I'm just after coming back home from doing Ahar Dan, I had a good sleep, had nice lunch, and now just I came here to the metro, so waiting for the train. So what I want to tell you is, and this Digambar Muni Maharaj, he will be here today, tomorrow, and even day after. So if possible, even tomorrow and day after, I'll be going to that Jain temple. Not the one near my place. It is quite far away. I'll be going to that Jain temple, and I'll be doing Ahar Dan. I'll be doing Ahar Dan to the Digambar Jain Sadhu. So I'll do it. So I did it today. After doing today, if possible, I'll even do it tomorrow and day after. So this is very fortunate for me. ये बहुत बड़ा पुण्य का कारण है. Getting an opportunity to do Ahar Dan to a Jain sadhu is not a small thing. It takes lot of punya to do it. It takes lot of, you need to have lot of punya to get this opportunity. So I'm so lucky to have this opportunity. And in fact today was the first time in my entire life I did Ahar Dan to a Jain sadhu, to a Digambar Jain sadhu. So even tomorrow and day after I'll be doing. So as you can see now behind me, the train has come. So I will go for my meeting, and I'll catch all of you very soon with my next video. Till then, please watch, like, share, and keep subscribing to my channel. Thank you and have a nice day. Thank you.